हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीए आफ्टर बीकॉम, लाइक हाउ रिलेवेंट इट इज़ टू डू एमसीए राइट आफ्टर योर बीकॉम, बिकॉज बीकॉम के बाद ज़्यादातर लोग परस्यू करते हैं या तो एमकॉम कर रहे हैं या दे गो फॉर द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए थिंक. Few of your questions were about this, that what if they do MCA right after your BCom. So सबसे पहले मैं बता दूँ, हम MCA के बारे में जान लेते हैं. MCA बेसिकली मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नाम है एंड ये टेक्निकल कंप्यूटर साइंस की एक टेक्निकल साइड है. MCA इज़ अ 3-year पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन योर कंप्यूटर फील्ड and to get admission in this course you need to complete your graduation from a recognized university as the compulsory subject maths in your 12th examination. So इसके लिए MCA के जाने के लिए, MCA परस्यू करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है एंड ग्रेजुएशन वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें 12th में आपके पास मैथ्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको MCA करनी है राइट आफ्टर बीकॉम. बिकॉज अगर मैथ्स नहीं होगी तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आधी वैसी ही हो जाएंगी, बिकॉज सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आस्क फॉर दिस क्राइटेरिया कि दे आस्क मैथ्स एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर 12th. सो MCA के बाद आप बीकॉम आसानी से कर सकते हो. यू आर एलिजिबल फॉर दिस MCA इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज लाइक अन्ना यूनिवर्सिटी, NITs और गवर्नमेंट कॉलेजेस. अगर आपके करिकुलम में स्टैटिस्टिक्स है तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली आपको एलिजिबल बना देता है MCA करने के लिए. लेकिन कहीं MCA के लिए आई वोंट सजेस्ट यू टू गो BCom. I won't suggest you to go right after your BCom for MCA until and unless you have that computer programming knowledge, Android development, big data, SAP, because these courses you will be studying furthermore in your MCA, and you should have that interest in such subject. Then only you will be able to complete out that entire degree. But you need to have the background knowledge of this computer architecture at least, like otherwise it will be very difficult for you to understand the technical terms in your CS. So basically, if you are having a deep interest in this computer side, computer background, computer technologies, so definitely you can go for the MCA. But if you are blank with all those topics and you are unaware about the terms and you're unaware about the concepts and everything, then honestly guys, don't go for the MCA, as because MCA is quite deep in your all those technologies. So statistics and maths and financial management are just extra subjects in your MCA. That won't be that won't be much a help. But because main focus in MCA will be on C programming, operating system, data structures, networking and so on. So अगर आपका इंटरेस्ट C प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर या नेटवर्किंग इन सब टॉपिक्स में है तो ही MCA के लिए जाना. बिकॉज आपका स्टैट्स, मैथ्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट ये सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं MCA में. इनके बेसिस पे मत चले जाना MCA करने कि ये ही आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ये इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ के आए हो या ये सब्जेक्ट्स आपके हैं जानने वाले, तो आप इनको MCA उस हिसाब से कर सकते हो. नो रियली गाइज, बिकॉज ज़्यादा वेटेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग नॉलेज या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है. तो अनटिल अनलेस आपके पास थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज है उससे रिलेटेड, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड या इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो ही MCA के लिए जाना, बिकॉज वरना वो आपके लिए बहुत हार्ड पड़ जाएगी. Otherwise, if you are a BCom person, so you can go for your ICWA or you can go for the bank jobs. So MCA can be done but after BCom, but you need to have 12th, you need to have maths in your 12th. That is very mandatory. And just try to join MCA only and only if you are passionate about programming. अगर programming में interest है and उसमें ज़्यादा सीख सकते हो, लगता है कि you can do it, then only join MCA. As you're already having a commerce background right after doing your BCom, so you can go for the MBA, CA, MCom options that are quite beneficial. So accounting, accounts, banking, company secretary and various options are also available right after doing your BCA. And if you really want to go for this MCA course, then yes, you can go, and only go if you are having a deep interest in this programming thing. And if you guys had maths in your, if you guys studied maths in your 12th, so definitely you that makes automatically eligible for your MCA applications. So you just need to have 50% in your bachelor's degree, which could be anything, from which could be any bachelor's graduation degree,
and you should have maths in your 10+2. That is very mandatory. So in some of the universities I've seen some they have kept 55 or 50 or 60% criteria in your graduation. So you just need to check out your colleges or your degrees or your colleges or your universities what they ask. And second thing they require is the graduation degree which has been affiliated with the UGC. Definitely you'll be having it as you have done BCom. And in few of the cases you have to clear a required entrance test that is conducted by the colleges you apply. That is in a few of the cases only. So that was a video about MCA, doing MCA right after your BCom. So definitely you can pursue, and I've told you if you are having deep interest, then only go for MCA. Otherwise you have many other options open for you. So that was all for the video, guys. To know more about the updates, please do not forget to subscribe and do comment about the video if you have any further doubt. So please हमें बताओ so that we can solve it out. So till then, bye. See you in the next video. Bye.